Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So, yesterday we have seen the basic concept of data mining. Can anyone tell what is data mining? Yes. Yes. What, what is data And mining? we determine the process by which we study about the information we collect. Sorry, speak loudly. Yes, anybody, what is data mining? What we have studied yesterday? I'm waiting for your response. I'm not getting your voice. मैम बहुत सारे डेटा में से कोई अपनी यूजुअल डेटा के मतलब खोजना ही डेटा माइनिंग कहलाता है। Right. Anybody else? डेटा माइनिंग में प्रोसेस है जिसके द्वारा रॉ डाटा से यूजफुल डाटा को कलेक्ट कर। Right. Okay. So the basic Yes. concept of data mining is to extract knowledge or extract patterns from huge amount of data. Right? ये हमने कल देखा था. We have so many sources of data, and then from that data we can extract the knowledge. We can extract useful information and use that information for other purposes. Like we can decide. Business strategies, we can take informed decision, we can like if it is used in healthcare, doctors can decide the line of treatment by using that patterns, or discover other things. Okay, so once again we'll see the definition and then we'll move forward. So data mining is the process of discovering interesting patterns and knowledge from large amount of data. Okay, and the data sources can be various, like databases, warehouses. So today we'll see what type of data can be mined. It is not like कि आपके पास कोई भी फॉर्मेट में डेटा है, मतलब कुछ डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, कुछ इमेज फॉर्मेट में है, या कैसा भी डेटा है, रॉ डेटा है, और उस पर डायरेक्टली हम डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स अप्लाई नहीं कर सकते. Okay, so today we'll see what kind of data will be mined. Before that, one more concept I used yesterday, that is knowledge discovery. Right, we were saying कि जो knowledge discovery होता है, knowledge discovery from data होता है, data mining is one part of knowledge discovery. Right, so we will see first the process of knowledge discovery. ठीक है, so this is the knowledge discovery process. Knowledge discovery from data, how that knowledge is discovered from data. Okay, so this is the process. You can see here there are multiple stages in this knowledge discovery process, and one of them is data mining. Okay, so we will see how knowledge discovery happens, how this process happens. Okay, so first we have a data warehouse. Okay, so what is this data warehouse, and that in detail we are going to see what is the data warehouse. For now, you can understand there is a large amount of data which is kept at various sources. जैसे for example I can say कि जैसे डीमार्ट है, so डीमार्ट के मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं. राइट, सो लेट्स से B1 ब्रांच का डेटा है, B2 ब्रांच का डेटा है, B3 ब्रांच का डेटा है. ये सब जब कलेक्ट होता है एक जगह पे, वी कॉल इट एज अ डेटा वेयर हाउस, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. ओके,
So हमारा डेटा है in all our data is there in our data warehouse. Okay, so the first step we perform on that data is selection. Okay, so which type of data we want to select from that entire data. Okay, because जो भी डेटा होता है जैसे हम कंसिडर कर रहे डीमार्ट का वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा कैन बी देयर, जैसे परचेज का डेटा है, सेल्स का डेटा हो सकता है, ट्रांजैक्शन का डेटा हो सकता है, देन कस्टमर्स का डेटा हो सकता है. गेटिंग इट? आ रहा है समझ में कि एक जो हमारा शॉपिंग मॉल है Yes, ma'am. उसमें जो डेटाबेस होता है उसमें उस डेटाबेस में वी हैव वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा, राइट? परचेज, सेल्स, ट्रांजैक्शन, कस्टमर, दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी देयर, राइट? तो पहले तो हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है, राइट? जैसे लेट्स फॉर एग्जांपल कि हमें सेल्स का पैटर्न फाइंड आउट करना है कि हाउ सेल ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज गेटिंग इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड ड्यूरिंग सम क्वार्टर. ओके, या ड्यूरिंग सम मंथ, लेट्स से जैन मंथ में हमें कुछ एक लेट्स से स्टेशनरी प्रोडक्ट का सेल्स का पैटर्न फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो ये क्या हुआ, दिस इज पर्टिकुलर टास्क. ओके, so we want to analyze sales data. So if we want to work on sales data, if we want to find out pattern in sales data, then there is no necessity to look upon these remaining data. अगर हमें सेल्स के ही डेटा के पैटर्न फाइंड आउट करने हैं तो हमें परचेज का, ट्रांजैक्शन का, कस्टमर का डेटा लगेगा ही नहीं, right? So the first step is from that data warehouse, from that entire data that we have, we will first select the data कि हमें कौन से डेटा पे वर्क करना है, that we will select. Okay, then on that data we will perform, after selection we will get our target data. Getting it? First, all our data is in data warehouse. We will apply selection on that data, and then after selection we will get our target data. So ये जो sales का data है, that is our target data. Got it? Then on that target data we will perform some pre-processing. Okay, so what is this pre-processing now? Pre-processing includes multiple stage multiple steps like जब भी हम डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट के आईडीज होते हैं, राइट? विच इज नॉट नेसेसरी. आईडी के ऊपर से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली. या फिर कुछ ऐसा डेटा है कि जिसमें वेयर सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, some noise is there, some unnecessary information is there. So in data pre-processing we clean our data. Okay, so processing में हम क्या करते हैं, we clean our data. Whatever target data we have, we will clean that data. And what is meaning of cleaning? Cleaning means we will remove unnecessary information, we will remove noise from the data, we will remove unnecessary columns from the data. Okay, that is called as cleaning. या फिर अगर हमारे डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज है तो वी विल रिप्लेस दोज मिसिंग वैल्यूज और वी विल रिमूव दोज records with missing values. So in this way we will clean our data. Got it? So after pre-processing we will get pre-processed data. Okay, so on this pre-processed data we will perform some transformation. So what type of transformation we will apply? We can apply normalization. Okay, so now these terms may get heavy for you, so don't get bothered about it. So जो भी प्री प्रोसेस डेटा है उस लेट्स से हमें सेल्स का एनालिसिस करना है तो हम कुछ एग्रीगेट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे. According to the task we want to perform, we will transform that data into required format. Getting it? पहले तो हमने क्लीनिंग किया, उसके बाद on that pre-processed data we will apply some transformation. Getting it? Then on that transformed data we will apply some data mining algorithms, some data mining techniques we will apply on that data transform.
So after transformation, whatever data we have, that data is fully pre-processed. Now that data is ready for data mining. Okay, on this data which is already there in data warehouse, we cannot directly apply data mining. We have applied these many steps on that data to get that data ready for data mining. Got it? So this data after transformation, we will apply some data mining tool on it, and or techniques on that data, and after applying data mining we will get some pattern. Okay, or some knowledge we will get, some useful information we will get, और whatever task we wanted to perform. जैसे हमने कंसिडर किया था कि हमें एक पर्टिकुलर मंथ में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स एनालाइज करना है कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसके साथ कौन कौन से आइटम्स का सेल इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट वी वांटेड टू परफॉर्म सम टास्क, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ डेटा माइनिंग एल्गोरिदम अप्लाई करके पैटर्न्स फाइंड आउट करेंगे, या डेटा माइनिंग टूल विल गिव यू सम पैटर्न्स. Okay, then you have to study those patterns. It's called as evaluation. You will evaluate those patterns कि इसमें से कितने पैटर्न relevant है, कितने पैटर्न irrelevant है. Okay, जो irrelevant है we will remove those irrelevant patterns, and the final result of this process is our knowledge. Okay, and this knowledge then we can apply to decide our business strategy. Okay, so this knowledge is getting applied, this knowledge is getting used for giving better services, for deciding business strategies, to take informed decisions. Okay, so at the end result of this KDD process is knowledge, and that we can apply anywhere. Is there any doubt in this entire knowledge discovery process? No, ma'am. Ma'am, at the stage of data transformation, Hmm. hello, ma'am. Uh, When transformation. where we applied Hmm. yes, Hmm. मतलब हम इस स्टेज पे आके मतलब जो डाटा को प्रोसेस किए उसको मैम ट्रांसफॉर्म करेंगे जो हमारी नीड होगी उसके हिसाब से. हाँ, प्रोसेस, ये प्री प्रोसेसिंग मतलब वी आर जस्ट क्लीनिंग द डेटा, कि यस. कभी कभी डेटा में जो अननेसेसरी कॉलम्स होते हैं वो हम रिमूव करते हैं. इफ समटाइम्स जैसे हमारे लेट से डेटाबेस में हमारे पास 50 कॉलम्स है, लेकिन कुछ एक ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग है, तो ऐसे रिकॉर्ड्स हम रिमूव करेंगे. वी आर जस्ट क्लीनिंग द डेटा. यस. जैसे कुछ कॉलम से आईडी, जैसे जिनकी हमें कुछ ज़रूरत नहीं है तो हम आईडी निकाल देंगे, उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसिंग और क्लीनिंग द डेटा. और क्लीनिंग के बाद या प्री प्रोसेसिंग के बाद जो हमारे पास डेटा है उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इन रिक्वायर्ड फॉर्मेट. रिक्वायर्ड मतलब जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल कन्वर्ट दैट डेटा इनटू रिक्वायर्ड फॉर्मेट, एंड देन on that data we will apply data mining. Clear? ओके मैम. यस. Okay. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. So let us move further. So whatever I have explained you, I just summarize those steps here. Okay, knowledge discovery के जो process है, जो मैंने अभी पूरा explain किया, उसका summary इस slide में है. Okay, so I'll skip this slide and we'll go further. Now we'll focus on what kind of data can be mined. Okay, so जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेटा वेयर हाउस में या डेटा बेसिस में आपके एज इट इज़ डेटा है, दैट एज इट इज़ डेटा वी कैन नॉट यूज फॉर data mining, right? So here now we will see what kind of data can be mined. So here is the list.
This is the entire list of data on which we can apply data mining. Okay, after some pre-processing obviously, but this is the data, these are the types of data where data mining can be applied. Okay, so data here in the list, first is database oriented data set. In that, relational databases are there. Then on data warehouse we can apply data mining, and on transactional databases we can apply data mining. Okay, after that we have other types of data which are listed here, like some sensor data, जैसे IoT devices में जो data हम collect करते हैं, that type of data. Time series data, जैसे गूगल का हमें टाइमलाइन आता है, that sort of data can be mined. Then structural data, graph data, या social media का जो data है, social network का जो data है, that is in the graphical format, that can be mined. Object relational databases can be mined, and these are some examples of data which can be mined. Okay, so in further slides we are going to see them in detail. So let us first start with relational database. Okay, we will understand what relational database is. I know you have already studied relational databases. We will just have overview of relational database. Okay, so in our list, the first is relational data. Okay, so relational type of data can be mined. Okay, we will understand what relational database is. Okay, so as you know, what is there in relational databases? You have studied RDBMS, right? तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? यस मैम। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? आपने पढ़ा है ना रिलेशनल डेटाबेस? यस तो क्या होता है रिलेशनल मैम, डेटाबेस इसको में? मैम डाटा को रॉ और टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। डेटा को हम उसमें मैं दो टेबल में अलग अलग डिवाइड करके उसको मैं फॉरेन की से कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट राइट? कर देते हैं। ये जो इन रिलेशनल डेटाबेस वी हैव टेबल्स. In tables we have attributes. Attribute means, let's say I have a employee table, right? So this is, let's say, employee table. In this employee table I will have EMP ID, name, let's say, and address. Okay, so what are attributes here? What do you mean by attribute? This is my table. तो मैम कॉलम को शो कराते हैं। कॉलम को हम कहते हैं एट्रीब्यूट, राइट? सो हियर फॉर दिस एम्प्लॉय टेबल, EMP ID, name, address, these are the attributes. And what do you mean by tuples? जो में रो होते हैं। Tuple is रो nothing का but the row. Okay, so this is one tuple, this is another tuple, this is another tuple. So actual value जैसे EMP ID 1 है, name है कुछ, और address है कुछ. Okay, so this is what one tuple. Likewise, we have many tuples in one table and multiple attributes in one table. Okay, every attribute has some data type. Okay, and this entire relational database is inspired by ER model, right? What is ER model? What is ER model? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। Right, एंटिटी entity रिलेशनशिप मॉडल। relationship model, right? So this relational database, this entity relationship model is used to represent database as a set of entities and their relationship. जैसे employee एक क्या है? Entity, right? So हमारे पास और भी कुछ टेबल होंगे, जैसे डिपार्टमेंट, तो ये हो गई another entity. And in between employee and department there must be some relation, right? So these relational databases are inspired by ER model, entity and relationship between those entities. So every entity, for every entity, we use a separate table, right? And for relationship, we use foreign keys and primary keys, right?
Now once we have stored this data in the database, how can we access the data? जैसे मेरे पास ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें लेट से 100 टपल्स है, तो हाउ टू एक्सेस दिस डेटा? डेटा स्टोरेज तो हो गया मेरा. Now I want some I want employees, I want to fetch records of some employees. जैसे मुझे फर्स्ट इन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए, तो हाउ कैन आई एक्सेस दैट डेटा? कैसे करते डेटा को एक्सेस? क्वेरी चलाते हैं मैम। Query, right? So we have query So, languages, हाँ, query languages like SQL, right? Using those query languages, we perform some queries. Can you give one example of query? कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं कैसे क्वेरी लिखूंगी? यस, एनीवन? पहले मैम सेलेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद सिलेक्ट, जो फील्ड में सर्च करता है वो, राइट, फिर फ्रॉम, कहाँ से, किस टेबल से, टेबल नेम। ओके, वेरी गुड. सो आई कैन राइट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, it will give me all the records, right? So this is how, by using queries, I can fetch the data, I can access the data, right? Or in advance to that we have some aggregate function. जैसे मुझे चाहिए average salary of employee, तो I can, what I can do, select, I can use some aggregate functions, right? So हमारे पास कुछ aggregate functions होते हैं, जैसे average, sum, count. We use those aggregate function to get more formatted output, or output in required format. Okay, so to access data, to access relational data, we have query languages, queries, aggregate functions. Okay. Now, see, with this query language, we are selecting, or we are accessing data that is already known. मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें इतने रिकॉर्ड्स है, या उसमें से ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड मुझे चाहिए, या उसमें से ये पर्टिकुलर कॉलम का एवरेज मुझे चाहिए. ओके, दिस इज नॉट डेटा माइनिंग. ओके, कीप इन माइंड, वी आर जस्ट एक्सेसिंग द डेटा दैट इज ऑलरेडी नोन. जो कल किसी ने पूछा था कि हम सर्च करते हैं, राइट? तो जब आप सर्च करते हो already existing data में, तो you are just accessing that data, that is not the data mining. Okay, so how data mining happen in relational databases? See here, finding the patterns. मतलब data mining goes beyond simple queries by finding trends and patterns in the data. So ये जो trends and patterns हम find out करते हैं data में, तो ये trends and patterns हमें पता नहीं होते हैं. Getting it? कि जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको एग्जांपल दिया, कि अगर मुझे सेल्स का पैटर्न फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर मंथ में मेरे से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल्स का पैटर्न कैसा है, दैट इज नॉट स्टोर्ड इन आवर डेटाबेस, राइट? वी हैव इन आवर डेटाबेस, वी हैव जस्ट स्टोर्ड डेटा फॉर सेल्स. ठीक है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर मंथ का डेटा आप रिट्राइव कर सकते हो, लेकिन जब आपको पैटर्न से ट्रेंड चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ डेटा माइनिंग का टेक्निक अप्लाई करना पड़ेगा, एंड देन इट विल गिव यू पैटर्न. हो रहा है क्लियर कि डिफरेंस कैसा है, कि जब हम डेटा को एक्सेस करते हैं और डेटा को माइन करते हैं? डिफरेंस क्लियर हो रहा है? यस. यस मैम। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इट कैन प्रेडिक्ट द क्रेडिट रिस्क. जैसे मैंने बताया, ये क्रेडिट रिस्क होता है बैंक के डेटा पे, राइट? तो बैंक में हमारे पास ट्रांजैक्शन का डेटा है, किसने कितना लोन लिया है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, that that all data we have, that type of data we can fetch using queries. लेकिन if bank want to give loan to some customer, तो इस that particular customer should loan should be given to that particular customer or not, that
that knowledge we can get using data mining. Okay, so this with data mining tools we can predict credit risk of new customer based on their income, age, credit history, etc. Okay, so this is the knowledge, or this is the pattern we are getting by using some data mining technique. Okay, then another one is detecting deviation. So data mining can spot unexpected changes in data, जैसे significant drop in sales compared to last year. Okay, so we have all data, we have sales data of like last 10 years. Okay, we can anytime get data of any year by using queries. But if there is a significant drop in sales compared to last year, okay, that overall idea can only be given by using exhaustive process of data mining. Okay, so this deviation will highlight issues like changes in product packaging कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हमारा सेल इस साल सडनली ड्रॉप हो रहा है, तो we can use some different business strategy, we can change product packaging, we can identify कि why that sale is getting dropped. Okay, but उसके पहले हमें पता तो होना चाहिए कि सेल में ड्रॉप हो रहा है, right? So that information can be given after applying some data mining technique. Okay, so this is how data mining can be applied on relational data. Clear? Any doubt? Please give response. No doubts? नो मैम। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लेना. Okay, now let us move to the another data type, that is data warehouse. Okay, तो हमने केडीडी प्रोसेस में देखा था कि हमारा डेटा स्टोर होता है डेटा वेयरहाउस में, राइट? सो नाउ वी विल सी व्हाट इज डेटा वेयरहाउस. So this data warehouse is a centralized place where data from multiple sources is collected, cleaned, integrated, transformed and stored. Okay, what is data warehouse? It is centralized place. Okay, in this diagram you can see data warehouse is a centralized place where data from multiple sources, जैसे ये जो particular data warehouse है इसमें multiple sources से data आ रहा है, जैसे data source, there is a one data source in Chicago, one data source in New York, one data source in Toronto, one data source in Vancouver. Okay, and we are integrating data from all these resources. Okay, not only integrating, before integrating we are cleaning the data, then we integrate, transform, and then we are storing that clean data, that pre-processed data, that transform data into data warehouse. Okay, now once we have this data in data warehouse, we can apply data mining techniques on this data warehouse to generate the patterns, to get the knowledge. Okay, so what are the benefits of data warehouse? It is easy to access, जैसे instead of accessing data from various resources, जैसे मैंने आपको डीमार्ट का एग्जांपल दिया था कि डीमार्ट के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, हर एक ब्रांच में अलग अलग ट्रांजैक्शनल डेटा होगा. ओके, तो हर एक ब्रांच का अलग से एनालिसिस करने से अच्छा है कि अगर हमें वो पूरा डेटा, सारे ब्रांचेस का डेटा एक ही जगह पे मिल जाए, right? So for that data warehouses are used. Getting it? Yes, ma'am. So
after integrating all those data, then we can apply data mining technique on that. Just a second. These are the benefits: easy access. Why it is easy to access? Because all our data is in one place. So it makes our analysis very easy. Then we get organized data. जैसे शिकागो के ब्रांच के अलग कस्टमर्स होंगे, न्यूयॉर्क के ब्रांच के अलग कस्टमर्स होंगे, टोरंटो के अलग कस्टमर्स होंगे. नाउ वी आर गेटिंग ऑल कस्टमर्स इन वन टेबल, right, in one structure. So our data is getting more organized, right? And data warehouse can store historical data, like it stores data from the past and it is summarized over months, years, and with that we can easily analyze, we can easily find out the trends or patterns in the data. Okay, so these are benefits of using data warehouse. Okay, now we will see some more concepts related to data warehouse. Okay, now in data warehouses to get, जैसे हमने देखा रिलेशनल डेटा में हमारे पास क्या थे, टेबल्स, attributes, tuples, right? In relational databases, how data is getting stored? In the form of table, and in one table we have multiple attributes and multiple tuples, right? Just like that, in data warehouse, data is stored in the form of data cube. Okay, now what is this data cube? We will see that. In data warehouse we have multi-dimensional data. जैसे in relational database we have only two-dimensional data, only rows and columns are there, but in data warehouse we have multi-dimensional data. Okay, and for storing this multi-dimensional data, data cubes are used. Okay, so here you can see the data cube diagram is given. Okay, तो यहाँ पे क्या है, in this data cube these dimensions are representing various parameters. जैसे address है, okay, you can consider this as जैसे कुछ एक मॉल है, we'll consider Walmart. Okay, so this Walmart have various branches, various outlets in various cities. Okay, so these are the 4 cities. So this dimension represent addresses. Okay, then these dimension represent quarters. Okay, in 1 year we have 4 quarters, so Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, these are the quarters. Okay, then this amount represent what? Sales in $1,000. ओके, जैसे अगर ये पर्टिकुलर क्यूब हमने कंसिडर किया तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ओके, विल कंसिडर दिस वन. तो ये पर्टिकुलर क्यूब क्या रिप्रेजेंट करेगा? फॉर दिस, ये कौन सा एड्रेस है? वैनकूवर, राइट? So this particular data cube will represent that in Vancouver city in quarter Q1 the sale for some security item was $400,000. Getting the point? Why we need this data cube is because in data warehouse we have multi-dimensional data, right? जब multi-dimensional data है हमारे पास तो वो हम relational database जैसे structure में store नहीं कर सकते, right? That is why we have data cube, right? So this each dimension of this cube will represent different dimension of your data, right? तो ये cube है 3D, so we have 3 dimensions, we can represent 3 dimension in this data cube, right? तो वो 3 dimension कौन कौन से हैं हमारे? एक तो है address,
another dimension is time, and the third dimension is product, कि कौन से कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जैसे होम एंटरटेनमेंट है, कंप्यूटर है, फोन है या सिक्योरिटी है. वी हैव कंसिडर्ड these four categories of items. Okay, now each cube will represent these three dimensions. ओके तो कोई भी क्यूब आप एक कंसिडर कर लो, जैसे ये अगर आपने कंसिडर किया तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये, इन वैंकूवर सिटी द सेल अमाउंट इन Q1 फॉर होम एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट इज $605,000. अंडरस्टूड. यस, ये थोड़ा लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल अगेन एक्सप्लेन, जस्ट लेट मी नो. यस, डाउट है कुछ? No doubts? Shall we move further then? Please respond. Okay, okay, I'll repeat. Messages, message I am to see. Okay, I will repeat. Okay. So in data warehouse, see, whenever I'll explain this data cube, you just correlate this with relational database because you know what relational database is, right? तो relational database में हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा होता है, राइट? जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल है, उसके दो एट्रीब्यूट्स कौन से, दो डायमेंशन कौन से है, एक तो एट्रीब्यूट्स एंड अनदर वन इज टपल, जैसे कॉलम्स एंड रोज. दिस इज टू डायमेंशनल डेटा. But in data warehouse we store multi-dimensional data, right? Because we have data from multiple sources, so that data becomes multi-dimensional, and that multi-dimensional data cannot be stored in databases like relational database, so we use data cube. Okay, so this is the first thing कि हमें यहाँ पे data cube क्यों लगता है, because we have data from multiple sources or multi-dimensional data, and that is why we use data cube, right? Then another thing here is each dimension of this data cube represent an attribute, right? So in this example, here we have this data cube. So each dimension, how many dimensions are there for this data cube? Three dimensions, right? So first dimension is representing address, second dimension is representing quarter, and third dimension is representing item types. Okay, so addresses can be different. So here we have considered four addresses, जैसे ये जो four addresses है cities है वो. Then we have considered four quarters and we have considered four types of items. Okay, then this is about each dimension. Now we'll talk about each cell. Okay, so each cell in the cube store total cell value. Okay, तो ये 605 825, this is what सेल वैल्यू इन $1000. ओके, तो आप कोई भी एक सेल उठा लीजिए, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे वो मैंने बताया कि नाउ विल टेक एग्जांपल ऑफ दिस 825. ओके, इंस्टेड ऑफ दैट विल कंसीडर दिस वन 395. ओके, तो ये 395 का सिटी कौन सा है, नाउ यू टेल what is city, what is address for this 395. Yes, I'll write here 395. What is city of 395? Yes,
टोरंटो, करेक्ट। उसके बाद अनदर डायमेंशन इज क्वार्टर, इन विच क्वार्टर इट इज प्रेजेंट, ये कौन से क्वार्टर का डेटा है ये वाला, दिस फर्स्ट लाइन इज फॉर, yes, quarter which first, quarter first, okay, so Q1. And then which type of items are there, yes, 395, home entertainment, yes, home entertainment, right, home entertainment. Now what is meaning of this, in Toronto branch in Q1 quarter the sale of home entertainment product was $395,000. Now clear, this is how this data cube is read, or this is how data from data cube is accessed, okay. जैसे रिलेशनल डेटाबेस में हम सिलेक्ट क्वेरी से एक्सेस करते थे, जैसे सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, तो हमें क्या मिलता था, एम्प्लॉय के आईडी एम्प्लॉय के नेम सारे, राइट। वैसे ही डेटा क्यूब से अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो ईच सेल यू हैव टू consider, okay, for each cell there will be 3 dimension, got it, okay, I hope now it is clear. So this is called as data cube. So in data warehouse data is stored in data cube. अभी तक ये हमने क्या देखा है, सिर्फ स्टोरेज, हम अभी तक डेटा माइनिंग तक पहुंचे नहीं है, we have just seen storage and access of the data. Now for okay, this data cube is just for storage. Now how the data is accessed in data warehouse, okay, again correlate with it with relational database, okay, relational database में storage कैसे था, table में, access कैसे था, query language से, right. Now in data warehouse we can access data using online analytical processing, getting it, correlate हो रहा है आपके mind में, yes ma'am, तो ये डेटा वेयर हाउस में डेटा क्यूब से जब भी आपको कुछ भी डेटा एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए क्या यूज होता है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ओके। सो दिस डेटा वेयरहाउसेस सपोर्ट ओलैप ऑपरेशंस which help us in summarizing and analyzing data at different level, ओके। तो जैसे हम रिलेशनल डेटाबेस में एग्रीगेट फंक्शंस यूज करते हैं, सिलेक्ट क्वेरीज यूज करते हैं, वैसे ही डेटा वेयर हाउस में हम ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज करते हैं टू समराइज और टू एनालाइज डेटा एट डिफरेंट लेवल्स, ओके। सो different operations like drill down, roll up operations are there using which we can summarize the data, right, जैसे लेट्स से ये जो डेटा क्यूब है इसमें हमारे पास डेटा है सिटीज, सेल्स का डेटा इन वेरियस सिटीज इन क्वार्टर, लेकिन अभी आपको डेटा चाहिए मंथ वाइज, ओके। तो ये Q1 क्वार्टर में मंथ्स आते हैं, जैन फेब एंड मार्च, राइट। तो आपको ये मंथ वाइज डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज करके डेटा को ड्रिल डाउन करेंगे, ओके। ड्रिल डाउन के बाद आपको मंथ वाइज समरी दिखेगा, ओके। या फिर इंस्टेड ऑफ in this cube, instead of various cities you want country wise data, तो कंट्री वाइज डेटा अगर आपको चाहिए तो आप रोल अप करेंगे, likewise various operations are there in online analytical processing using which you can access the data, clear, fine, yes ma'am, okay. Now after accessing we can apply data mining, okay. So
अगेन डेटा माइनिंग गो बियॉन्ड एक्सेसिंग द डेटा। ओके, तो ये जो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, इससे हम सिर्फ जो हमारे पास डेटा एग्जिस्टिंग है, जो हमें ऑलरेडी पता है कि इस टाइप का डेटा प्रेजेंट है, उसको हम कुछ समरी के फॉर्मेट में या डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सेस करेंगे। लेकिन when we apply data mining on that summarization, we will get unknown patterns, we will get knowledge, or we will get trends in the data. Okay, and that knowledge, that trends or patterns in the data, we can use for deciding business strategies, to take informed decisions, to make better services, etc. Okay, that is the only purpose of data mining, कि जो भी कुछ नॉलेज मिलेगा, समवेयर वी विल अप्लाई दैट नॉलेज टू एनहांस द बिजनेसेस, टू टेक इन्फॉर्म डिसीजंस, to for discovering some new patterns. Okay, so beyond that, beyond your data access, data mining goes. Okay, so while OLAP helps with summarization and weaving data, data mining tools are needed for deeper analysis. Okay, so this deeper analysis can only be done by using some data mining technique. Okay, so on such multidimensional data also, data mining can be applied to get some deeper insights from the data. Is it clear till now? Any doubt in today's session? No, ma'am. Attendance. I will take attendance. Yes. Just a second. आपने क्लासरूम ज्वाइन किया विद दैट लिंक? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. मैंने अभी तक वहाँ पे कुछ भी मटेरियल अपलोड नहीं किया है। आई हैव जस्ट क्रिएटेड द क्लासरूम। अभी ये जो लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स हैं एंड दिस पीपीटीज एंड एवरीथिंग आई विल अपलोड देयर, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। ओके, अभी तक मैंने नहीं किया है, बट शॉर्टली आई विल डू दैट। जस्ट join that classroom. Okay, and from tomorrow onwards I will post link for the lecture on that classroom only. Okay, ma'am. Okay, I have taken the screenshot. I'll mark the attendance accordingly. Okay, so for today we'll stop. We'll continue in the next lecture. Okay, ma'am. Thank you.